Welcome, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work honestly. And, my dear students, you have to do. Firstly, I want to tell you one thing that you have to understand all the terms, conditions, and definitions of mathematics with conceptually, because concept is power. And if you understand all this with conceptually, then there will be not any type of problem in further studies also of mathematics. Okay. So, my dear students, in last videos we discussed for first to fifth sum of exercise 4.3. Now today we will discuss our sixth sum, and the statement of this sixth sum is, if the work done by the body on the application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Draw the graph of the same. It means firstly we have to express it in linear equation. Firstly we have to express it in linear equation. Then we have to draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit, and also read the graph, the work done when the distance traveled by the body is 2 unit, and in second condition 0 unit. Understood the statement? My dear students, in the statement the condition is given, if the work done by the body on the application of constant force is, it means work done given है. So let the work done क्या है, directly proportion है. If the work done by body on the application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, इट मीन्स हमारा वर्क डन प्रपोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ठीक है, ये कंडीशन गिवन है. सो फर्स्टली वी लेट अवर वर्क डन. लेट द वर्क डन इज, लेट द वर्क डन बाय बॉडी. ठीक है, इट इक्वल टू डब्ल्यू. वर्क डन है तो हमने डब्ल्यू लेट कर लिया. ओके, एंड देन वी हैव टू अज्यूम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑल्सो. आप लिखोगे लेट distance traveled by the body, traveled by the body equal to distance traveled by the body है ना, तो let it be s. s ले लो, d ले लो, as you wish. ठीक है, distance traveled by the body be s and the work done be w. Clear? Now it is given according to the question, work done is directly proportional to distance traveled. ठीक है, आप लिखोगे यहाँ work done, it means W is directly, this is a sign of proportionality, is directly proportional to distance traveled. Distance traveled. ठीक है, it means distance traveled by body, that means our S. Okay, this is according to question. According to question, work done is directly proportional to distance. It means W is directly proportional to S. Okay, and my dear students, if we remove the sign of proportionality, then we have to multiply the right hand side by any constant force. Okay, so W is equal to, if I remove this proportionality sign, that means मैंने इस साइन को इक्वालिटी में चेंज किया तो राइट हैंड साइड में मुझे कांस्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दैट मीन्स एफ ले लिया मैंने. ठीक है, एफ इज अवर कांस्टेंट फोर्स एंड एस इज सेम. ठीक है, वेयर एफ इज कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, एफ इज अवर कांस्टेंट फोर्स एंड इट इज गिवन द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट. कांस्टेंट फोर्स तो हमें गिवन है 5 यूनिट, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ W इज इक्वल टू 5s. Okay, now my dear students, we have to express this in linear equation in 2 variable. ये तो बन गई है. हमारा फर्स्ट वेरिएबल W है, सेकंड वेरिएबल S है, and it is in 2 variable equation. Okay, now we have to draw the graph of the same. अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ में क्या होता है, हमारे कार्टेशियन प्लेन में वन इज एक्स एक्सिस एंड अदर इज वाई एक्सिस. सो ये भी 2 वेरिएबल में W और S में, तो हम इस W और S को, एक को हम लेट कर लेंगे S एक्स एक्सिस और दूसरे को लेट कर लेंगे वाई एक्सिस. ओके, सो अब हम टेबल यहाँ पे एज्यूम करते हैं. ओके, यस, तो S को हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक्स एक्सिस लेट कर लेते हैं. एज यू विश, आप कुछ भी यहाँ एज्यूम कर सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि S को ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को वाई एक्सिस में लेट कर लो.
माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो दिस कंडीशन ऑन द ग्राफ. मुझे ये कंडीशन ग्राफ में दिखानी है. ओके तो ग्राफ में इट इज़ नॉट कंपल्सरी. हमारे पास 2 वेरिएबल हैं W और S. आप उनमें से एक को भी x एक्सिस और दूसरे को क्या लेट कर सकते हो, y एक्सिस. ओके तो मैंने S को लेट किया x एक्सिस. ठीक है ना, आप लिखोगे S, यहाँ लिख दोगे x, ये मेरा x एक्सिस का काम करेगा. W वर्क डन मीन्स y एक्सिस. ओके ओके नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. When our S is 0, अगर मैं S को 0 लूँगी तो W क्या हो जाएगा, W इज ऑटोमेटिकली 0. S अगर 0 है तो W भी 0 हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. इफ S इज 1, अगर मैं S को 1 लेती हूँ तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. 5 क्रॉस 1 5. ठीक है. इफ S इज 2 then W will be 10. Okay, now I can take only negative value also. तो मैंने लिया S को -1 लिया. ठीक है, S is -1 then W be -5. Very good. This is my table. Now I have to plot all these points of the Cartesian plane. That means I have to draw the graph of this linear equation in 2 variable. Okay. Now my dear student, this is Cartesian plane, x-axis and y-axis, and we have to draw this linear equation in 2 variable on this graph, on this Cartesian plane. Okay, x-axis, and now we take x-axis as distance traveled, so we have to write as x as distance means S, this is our S, and y-axis as work done, तो मुझे यहाँ लिखना है W. Okay, this is work done. Okay, now I have to plot these points on this graph paper. First is when x is 0, y is 0. That means this is, okay, when x is 0 and y is also 0. Second, when x is 1, y is 5. X is positive 1. देखो, I take equal distance and I take one unit as 2, 4, 6, 8, 10 है, तो मैंने एक यूनिट को 2 लेट किया. ओके सो आपको स्केल में मेंशन करना है ऑन एक्स एक्सिस, द स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2. ओके तो 1 and 5, तो 0 2 के मिड पॉइंट दैट इज अवर 1, एंड वाई एक्सिस क्या है हमारा 5. इट मीन्स 4 और 6, द मिड पॉइंट इज 5. दिस इज अवर 5. ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है 1 and 5. This dot. Okay, and the next 2 10. If x is 2, the y is 10. Y is 10. This is 10. ये meeting point है ना 2 और 10 का. This is 2 and 10. Okay, and when x is -1, y is -5. x -1, x axis का -1 ये है. This is the midpoint, and y -5. -5 means this is. Okay, so this is the point when x is 1, -1, and y is -5. Okay, and now our work is we have to join these 4 dots and we have to draw a line. If the line is a straight line, that means our answer is correct, because a linear equation in 2 variables show a straight line on the graph paper. Okay, then now we have to draw a line. This is the straight line, and this line show a linear equation in 2 variable. Okay, this is a straight line and this line show linear equation 2 variable, and which linear equation? Linear equation is W equal to 5s. Okay, this is the, और W क्या है हमारा y axis, and s क्या है हमारा x axis. It means y is equal to 5x. Okay, this is a linear equation, and this straight line show this linear equation, graph of this linear equation. And next it is asked that we have to find the distance when the work done is given. If the work done is first case 2, if the work done is, sorry, we have to find the work done when the distance is given. And if the distance is 2 unit, we have to find the work done. And in second case, if the distance is 0 unit, we have to find the work done. And in first case, if the distance is 2 unit, my dear students, W equal to 5s. अगर हमारा distance 2 unit है, तो work done इस केस में क्या होगा? Work done होगा 2 × 5 equal to 10 units.
Okay, then we have to write if the distance is 2 unit, then the work done is 10 units. Second case, if the distance is 0 unit given, then we have to find the work done. आप लिखोगे if the distance is 0 unit, work done क्या है 5 क्रॉस 0 0 unit. अगर distance 0 है तो work done भी 0 है. Now we have to read all these from the graph paper. हमें ये graph paper से read करना है, ठीक है. तो graph paper में distance check करते हैं. If distance is 2, what is the work done? My dear student, distance हमने क्या x axis लिया है. If distance is 2, this is 2. अब graph line पर check करो कि work done क्या है. If distance is 2, the work done is 10. हमारा आंसर सेम है. And if distance is 0, 0, तो अगर x 0 है तो यहाँ y भी तो y 0 0 पॉइंट है ना. If distance is 0, then work done is 0. That is our answer. Very easy and clear. Understood, my dear students? If there is any type of doubt, then you can comment. Now, my dear student, next sum, the question number 7. Yamini and Fatima contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help earthquake victim. And we have to write a linear equation in 2 variable, and we have to draw the situation on the graph also. Okay, Yamini and Fatima contributed ₹100. This is very simple. And we have to express this as linear equation in 2 variable. 2 variable means हमें 2 conditions होनी चाहिए. एक यामिनी है, एक फातिमा है. Let Yamini's contribution x rupees, Fatima's contribution y rupees, and x plus y equal to 100. This is very easy. आप लिखोगे let Yamini's contribution equal to rupees x, Fatima's contribution rupees y. Okay, according to question, both contributed ₹100. It means x plus y equal to 100. This is a linear equation in 2 variable. Clear? Now we have to express this on the graph paper. That means firstly we have to find the solutions. Okay, so we have to make a table. This is x and y. When x is 0, y be 100. अगर x 0 है तो y को 100 होना पड़ेगा. If y be 0, then x be 100. Clear? And if x be 50, then y will be 50. All will be positive. ये rupees positive में होते हैं ना, ठीक है. These are the all 3. We can take any 4 or 5 solutions also, but minimum 3 and maximum you can take 4 or 5. Okay. So now we have to draw this on the graph paper. Okay. So my dear students, देखो, and in the last sum we take the scale 1 unit equal to 2. हमने यही स्केल लिया था. यहाँ देखो हमारे नंबरिंग क्या है 50, 100. ओके, सो एज वी विश वी कैन टेक 50 गैप और 20 गैप. हमारी मर्जी, हम कैसे भी गैप लें. लेट दिस बी 0. मैंने यहाँ 20 का गैप लिया है. 20 दैट इज 40, 60, 80 एंड 100. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस इट ऑल्सो 20, बिकॉज पॉजिटिव होते हैं ना, दोनों सेम लेते हैं हम. 40, 60, 80 and 100. Okay, this will our first quadrant. And lower side, below side we have to take negative, and x axis के left hand side we have to take negative of points of x axis. Okay, so this is our graph. Now we have to draw all these points on this graph paper. The first is 0 and 100. When x is 0, this is 0, y be 100. That means this be our point. क्या है? 0 and 100. We have to show these coordinates also. Okay, besides this point, हमें इस point के साथ coordinate भी लिखने हैं. Next, 100 and 0. When x be 100, y be 0. That means this is our point. 100 and 0. And the next be 50 and 50. Okay, when x be 50, y be 50. अब 40 और 60 के mid point 50 होगा. Yes, this is. And upside 40 and 60, the mid point be 50. That is our 50 and 50. Okay, so these are all 3 points. Now next work is we have to join all these 3 dots. Okay,
while joining the three dots. This is our linear equation in two variable, and we have to put arrow also because we can extend as we put another values also. Okay, so this is a linear equation of x plus y equal to 100. Okay, now we have to write the scale also. Okay, scale on x-axis, what you have to write? You have to write scale on x-axis. x-axis पर क्या scale लिया है? 1 unit equal to 50. This is the scale on x-axis, and scale on y-axis. Y-axis also 1 unit is equal to 50. सॉरी 1 यूनिट क्या लिया है? 50 लिया है? नहीं, हमने क्या लिया है? 1 यूनिट 20 के इक्वल लिया है. ओके, आप यहाँ लिखोगे 1 यूनिट इक्वल टू 20, नॉट 50. एंड y एक्सिस ऑल्सो 1 यूनिट क्या लिया है? 20 के इक्वल है. ओके, सो 1 यूनिट इक्वल टू 20. सो दीज आर आवर स्केल्स, नॉट 50. ओके, वी हैव टू राइट. आपने जो भी स्केल लिया, जितने का भी गैप लिया, दैट इज योर स्केल. आपने 1 यूनिट पे 2 4 6 8 मीन्स 2 2 का गैप लिया है, तो 1 यूनिट 2 के इक्वल हो जाएगी. अब इन एवरी टर्म द गैप क्या है? 20 20 का गैप है ना. सो आप लिखना है कि 1 गैप, all the time gap should be equal. It must be equal. Okay, so 1 unit equal to 20. This is a graph and this is very easy. If there is any type of doubt, then you can comment me.